extremism and intolerance are straining the social fabric of societies. When a state fails to regulate its religious affairs and institutions, it is likely that radical elements within some of these institutions may undermine its authority. Due to the state's loose control on religious institutions, the latter have been used as breeding grounds for extremism. In Muslim countries, religious misconstruction serves as the foundation of extremism. Whereas in non-Muslim countries, the vacuum created by the absence of religion is filled by Islamophobia. Religious extremism continues to be the common denominator, regardless of the state religion. Issues related to religion and religious leaders are often seen as sensitive and are swept under the rug. The criterion for the appointment of imams remains a key issue. In Pakistan, the state enjoys little control over the appointment of imams. It is typically subject to local approval. Although in prominent mosques the government appoints imams, prayer leaders of local mosques seldom go through the same vetting process. The absence of a screening process poses a serious challenge. The menace of extremism can be curbed if mosques and religious leaders are regulated by the government. In Turkey, the Directorate of Religious Affairs, Diyanet, is tasked with the appointment and supervision of imams. Diyanet is entrusted with drafting a weekly sermon which is delivered in mosques across Turkey. In Saudi Arabia, the Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance is in charge of the affairs of mosques and the appointment and supervision of imams. In Iran, the Ministry of Culture and Islamic Guidance oversees religious affairs, including the selection of imams. The potential imams are assessed based on their religious knowledge and loyalty to the state. The Friday Prayer Council is responsible for the distribution of pamphlets to around 900 Iranian cities weekly. These pamphlets comprise guidelines according to which the imams are to address Friday prayers. Extremism can be curbed if mosques are regulated. The National Action Plan was formulated to root out terrorism and extremism. NAPI highlighted the need for regulation of religious seminaries. Point 10 of NAP called for the registration and regulation of religious seminaries. The revised NAP has been divided into two domains, kinetic and non-kinetic. The regulation of madrasas falls under the non-kinetic domain. In Pakistan, as per federal law, all madrasas must be registered and licensed by the government. In the capital, however, numerous seminaries are operating illegally. Out of a total of 562 madrasas operating in Islamabad, approximately 250 are without a license. The authorities seldom take action against such seminaries, fearing a backlash from religious parties. In an effort to register and mainstream madrasas, the Directorate General of Religious Education was established under the Ministry of Federal Education and Professional Training, (FEPT), in 2019. By May 2021, the DGRE had registered over 5,000 madrasas in collaboration with the Ittihad Tanzimatul Madaris Pakistan, ITMP. In KP, seminaries were placed under the jurisdiction of the Education Department. However, more than 5 years after the announcement, the registration of madrasas is far from complete. The National Counterterrorism Authority was tasked with revising the curriculum of religious seminaries in collaboration with the HEC. 2 committees were formed to overlook the revision of the religious curriculum. However, no significant progress has been observed. Certain measures can be put into place to ensure the systematic appointment of imams. Firstly, proper education and training must be ensured. This can be achieved by collaborating with the ITMP and establishing a body that specifically oversees the training of imams. Screening and selection processes are needed to ensure that the individual is suitable for the position. Providing the imams with a conducive environment will ensure the efficient imparting of knowledge. This can be achieved by establishing an institution under the FEPT that assesses aspiring imams and sets a benchmark against which future aspirants can be evaluated. There is a dire need for evaluation. Periodic evaluation will ensure that the imams are carrying out their duties effectively. Evaluation may include feedback from local mosque committees.
The accountability of imams must be ensured to prevent the violation of laws. Sermons at Friday prayers need to be regulated. An umbrella organization can be devised, functioning under the Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony, which should be tasked with regulating Friday sermons. Such an endeavor can only be successful if there is cooperation between the center and provinces. The writer is a graduate of NDU and is currently pursuing a postgraduate degree from CIPS, NUST. Published in Dawn, March 31st, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. इंतहा पसंदी और अदम रवादारी मुआशरों के समाजी ताने बाने को मुतासिर कर रही है। जब कोई रियासत अपने मजहबी मामलात और इदारों को मुनज़्ज़म करने में नाकाम रहती है, तो इस बात का इम्कान होता है कि उनमें से कुछ इदारों के अंदर बुनियाद परस्त अनासिर इसके इख्तियार को कमज़ोर कर सकते हैं। मजहबी इदारों पर रियासत के ढीले कंट्रोल की वजह से मुअख्खर ज़िक्र को इंतहा पसंदी की अफ़ज़ाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। मुस्लिम ममालिक में मजहबी गलत बयानी इंतहा पसंदी की बुनियाद के तौर पर काम करती है, जबकि गैर मुस्लिम ममालिक में मजहब की अदम मौजूदगी से पैदा होने वाला खला इस्लामोफोबिया से पर होता है। मजहबी इंतहा पसंदी रियासत के मजहब से कत नज़र एक आम मसला बनी हुई है। मजहब और मजहबी रहनुमाओं से मुताल्लिक मामलात को अक्सर हसास समझा जाता है और कालीन के नीचे बह जाता है। इमामों की तकर्रुरी का मेयार एक अहम मसला बना हुआ है। पाकिस्तान में इमामों की तकर्रुरी पर रियासत का बहुत कम कंट्रोल है। ये आम तौर पर मकामी मंजूरी के ताबे है। अगरचे अहम मसाजिद में हुकूमत इमामों का तकर्रुर करती है, लेकिन मकामी मसाजिद के इमाम शाज़ व नादिर ही इसी जांच पड़ताल के अमल से गुजरते हैं। स्क्रीनिंग के अमल की अदम मौजूदगी एक संगीन चैलेंज है। अगर मसाजिद और मजहबी रहनुमाओं को हुकूमत की तरफ से रेगुलेट किया जाए तो इंतहा पसंदी की लानत पर काबू पाया जा सकता है। तुर्की में डायरेक्टरेट बराए मजहबी उमूर दियानत को इमामों की तकर्रुरी और निगरानी का काम सौंपा गया है। दियानत को एक हफ्तावार खुतबे का मसवदा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो तुर्की भर की मसाजिद में दिया जाता है। सऊदी अरब में वज़ारत इस्लामी उमूर, दावत और रहनुमाई मसाजिद के उमूर और इमामों की तकर्रुरी और निगरानी की जिम्मेदार है। ईरान में वज़ारत सकाफत और इस्लामी रहनुमाई मजहबी उमूर की निगरानी करती है, जिसमें इमामों का इंतखाब भी शामिल है। मुमकिना इमामों का अंदाज़ा उनके मजहबी इल्म और रियासत से वफादारी की बुनियाद पर किया जाता है। जुमा की नमाज काउंसिल ईरान के तकरीबन 900 शहरों में हफ्तावार पम्फलेट तकसीम करने की जिम्मेदार है। इन पम्फलेट्स में हिदायत शामिल हैं, जिनके मुताबिक इमामों को जुमा की नमाज से खिताब करना है। अगर मसाजिद को रेगुलेट किया जाए तो इंतहा पसंदी पर काबू पाया जा सकता है। नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बनाया गया था। NAP ने दीनी मदारिस को रेगुलेट करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। NAP के पॉइंट 10 में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन का मुतालबा किया गया है। नज़रसानी शदा NAP को 2 डोमेन्स में तकसीम किया गया है, हरकी और गैर हरकी। मदारिस की रेगुलेशन गैर हरकी दायराकार के तहत आती है। पाकिस्तान में वफाकी कानून के मुताबिक तमाम मदारिस का इंदराज और हुकूमत की जानिब से लाइसेंस याफ्ता होना ज़रूरी है। ताहम दारुल हुकूमत में मुतअद्दिद मदरसे गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में काम करने वाले कल 562 मदारिस में से तकरीबन 250 बगैर लाइसेंस के हैं। मजहबी जमातों की जानिब से रद्द अमल के खौफ से हुक्काम शाज़ व नादिर ही ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मदारिस को रजिस्टर करने और मरकजी धारे में लाने की कोशिश में 2019 में वज़ारत वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत MFEPT के तहत मजहबी तालीम के डायरेक्टरेट जनरल का क़याम अमल में लाया गया था। मई 2021 तक DGRE ने इत्तेहाद तंजीम मदारिस पाकिस्तान ITMP के ताउन से 5000 से ज़ायद मदारिस का इंदराज किया था। KP में मदारिस को महकमा तालीम के दायरा इख्तियार में रखा गया। ताहम इस ऐलान के 5 साल बाद भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हुई है।
नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी को HEC के ताउन से दीनी मदारिस के निसाब पर नज़रसानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मजहबी निसाब पर नज़रसानी को नज़रअंदाज करने के लिए 2 कमेटियां तश्कील दी गई। ताहम कोई अहम पेशरफ्त नहीं देखी गई है। इमामों की मुनज़्ज़म तकर्रुरी को यकीनी बनाने के लिए कुछ इक़दामात किए जा सकते हैं। सबसे पहले मुनासिब तालीम और तरबियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये ITMP के साथ ताउन और एक ऐसा इदारा कायम करके हासिल किया जा सकता है जो ख़ास तौर पर इमामों की तरबियत की निगरानी करता है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए स्क्रीनिंग और इंतखाब के अमल की ज़रूरत है कि फ़र्द इस ओहदे के लिए मौजू हैं। अइम्मा किराम को साज़गार माहौल फराहम करने से इल्म की मुअस्सर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। ये MFEPT के तहत एक इदारा कायम करके हासिल किया जा सकता है जो ख्वाहिशमंद इमामों का जायज़ा लेता है और एक मेयार कायम करता है जिसके खिलाफ मुस्तकबिल के उम्मीदवारों का जायज़ा लिया जा सकता है। जायज़े की अशद ज़रूरत है। वक्तन फ़वक्तन जायज़ा इस बात को यकीनी बनाएगा कि अइम्मा अपने फ़राइज़ मुअस्सर अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। जायज़े में मकामी मस्जिद कमेटियों की आरा शामिल हो सकती हैं। क़वानीन की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए अइम्मा के एहतसाब को यकीनी बनाया जाए। नमाज जुमा के खुतबात को बाकायदा बनाने की ज़रूरत है। वज़ारत मजहबी उमूर और बैन अल-मज़ाहिब हम आहंगी के मातहत काम करने वाली एक तंजीम तश्कील दी जा सकती है जिसे जुमा के खुतबात को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इस तरह की कोशिश सिर्फ इसी सूरत में कामयाब हो सकती है जब मरकज़ और सूबों के दरमियान ताउन हो। मज़मून निगार NDU से ग्रेजुएट हैं और फ़िलहाल CIPS नस्ट से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर रहे हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 29 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.